And on to the second story that we're debating on the show today. Sushant Singh Rajput's death case has opened up a can of worms, exposing the truth behind Bollywood's glam. 13 months after Akali Dal leader Manjinder Singh Sirsa filed a complaint against Karan Johar and other A-listers from Bollywood that appeared in a video that he shared, the Narcotics Control Bureau has taken up the task to dig up the truth in the allegation that drugs were used at that party. Now, the agency will not only verify the authenticity of the video, for which work has already begun, but also send a questionnaire to Karan Johar. You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. All right, and now let's continue with our guests. Subhrashta continues to be with us, but joining us is Malvika Avinash, spokesperson of the BJP. Also with us is Sanjay Gupta, political analyst and supporter of the Shiv Sena. Also with us at the moment is Tanvi Pruthi, political analyst. And let me begin with you. Malvika Avinash, one fact is this, that this is something that was pointed out a year ago. You know, if the NCB does get into this probe, what's the likelihood that they would actually find any kind of evidence from an event that occurred 13 months ago? Let me begin by saying that for long, all of these matters have been brushed under the carpet. We have pretended as if these problems do not exist. And, there have been many seniors from the film industry who have spoken in Parliament as well, literally sort of stonewalling any kind of such probe into what happens within the film industry. Let me quote to you what is happening in Karnataka, where the Crime Investigation Bureau, the crime branch, is thoroughly investigating every single party that was held in the last few months and has managed to collect a large amount of evidence against some of those who happen to be celebrities as well, apart from the peddlers. So it is perhaps the government in Maharashtra which is not interested at all in all of this. Let me get a response from Sanjay Gupta on that. That's an important point. Sanjay Gupta ji, जब ये कंप्लेंट एक साल पहले हुई थी, तब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को इससे सीरियसली क्यों नहीं लिया? और यदि उस वक्त सीरियसली लेती, तो क्या इस पूरे ड्रग रैकेट का, इस पूरे ड्रग सिंडिकेट का, ड्रग कार्टेल का उसी वक्त खुलासा नहीं हो जाता? यदि जो सिरसा जी कह रहे हैं अगर सही है, तो उसी वक्त एक साल पहले इसकी तहकीकात हो सकती थी। नहीं, देखिए, सिरसा जी तो एक इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसको मतलब एक घटिया राजनीति कहा जा सकता है, लेकिन मैं इसके विषय में बाद में कहूँगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि किसी पर निर्माता निर्देशक ने, करण जौहर हो या कोई भी हो, अपने घर में अगर पार्टी कर रहे हैं, अपने जन्मदिन की पार्टी मना रहे हैं या किसी और उपलक्ष्य में पार्टी मना रहे हैं, तो इस बात की पुष्टि कौन करेगा कि उनके घर के अंदर ये ड्रग चल रही है या वो शराब पी रहे हैं या वो तंबाकू ले रहे हैं? इस बात की पुष्टि तो कैसे की जाएगी? इस वीडियो को उन्हीं के एक साथी ने, जो कि इस पार्टी में था, उसी ने उसको पोस्ट किया। और पोस्ट करने के बाद मनिंदर सिंह सिरसा कहते हैं कि उन्होंने एक साल पहले भी इसकी कंप्लेंट की। वो एक साल पहले जो कंप्लेंट की, क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम संजय गुप्ता कि आपको कैसे पता कि ड्रग्स का उपयोग किया जा रहा था? दैट्स अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम हिम, प्लीज रिस्पोंड टू दैट। Just because it happens inside a private residence, is law breaking permitted? No, Malvika, the question that he's asking is how do you know that drugs were being consumed over there? That's the question he's asking. How does this video show it? The video does not show drugs. That's his point. The video does not show it, but there will be definitely matters that can be investigated into. How can you presume that it happened within someone's home and therefore shall not be, law breaking or shall not be investigated? How sad is that? And these guys govern Maharashtra. Imagine the law and order of that state. So the high and mighty can do whatever they want inside their ऐसे home. तो कोई किसी के भी घर की पार्टी की वीडियो ले आएगा, वो पार्टी की वीडियो लेके आकर के पुलिस में कंप्लेंट कर देगा कि यहाँ तो ड्रग्स चल रही थी, और हर किसी की इन्वेस्टिगेशन करवा देंगे आप तो। हाँ, कराओ ना, अगर जरूरत पड़ी तो कराओ, अगर डाउट है तो कराओ, अगर किसी के पास एविडेंस है तो कराओ। आप डरते किससे हो? आपको डर है ना? एविडेंस भी तो होना चाहिए। सिर्फ वीडियो आ गई, सिर्फ वीडियो आने से एविडेंस आ जाता है? सिर्फ वीडियो से एविडेंस आ जाता है? क्या इस वीडियो के अंदर कोई ड्रग दिख रही है कहीं? कोई धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है कहीं? बल्कि आपको तो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। ड्रग, क्या इसमें ड्रग दिख रही है?
क्या इसके अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है? नहीं, मतलब किसी को भी बदनाम करने के लिए आप कुछ भी, मतलब किसी भी शरीफ आदमी पे या किसी भी ऐसे किसी भी नामी ग्रामी आदमी पर आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी पे भी ब्लेम लगा देंगे, कुछ भी ब्लेम लगा देंगे। डर की बात नहीं है। संजय गुप्ता जी, सवाल ये उठता है, संजय गुप्ता जी, सवाल ये उठता है, संजय गुप्ता जी, 1 सेकंड, लेट मी जस्ट कम इन नाउ। संजय गुप्ता जी, सवाल ये उठता है कि क्या ये जो बॉलीवुड की अभी इस वक्त जिस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो इतने बड़े ड्रग की सीजर भी हुई है और कई सारे ड्रग सप्लायर्स का ये कहना है कि हम टॉप लेवल के ए लिस्टर्स को भी सप्लाई करते हैं, यदि इन लोगों की पार्टी में ड्रग्स का उपयोग नहीं किया गया तो इन्वेस्टिगेशन से क्या आपत्ति है उन्हें? नहीं, इन्वेस्टिगेशन से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशन की जांच हुए बिना और बिना इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकले बिना आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते कि यहाँ पे ड्रग ही चल रही थी। सर, आप बिना इन्वेस्टिगेशन के पता कैसे चलेगा? लेकिन इन्वेस्टिगेशन बिना इन्वेस्टिगेशन के पता कैसे चलेगा ये बात? नहीं, तो ठीक है, मान लिया कि बिना कंप्लेंट के इन्वेस्टिगेशन के पता नहीं चलेगा, लेकिन आरोप लगाना भी तो ठीक नहीं है ना कि यहाँ पे ड्रग ही चल रहा है। ये कहना भी तो ठीक नहीं है। अगर एनसीबी ने अगर इस मामले की कॉग्निजेंस ली है, अगर एनसीबी ने इस मामले की कॉग्निजेंस ली है तो उन्हें कुछ लगा होगा, तभी उन्होंने कॉग्निजेंस ली है। किसी इलीगल बॉडी ने तो प्रोब नहीं करी ना। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कोई भी कंप्लेंट अगर किसी भी डिपार्टमेंट की, जिस तरह से मुंबई पुलिस को इन्होंने कंप्लेंट की, मुंबई पुलिस को उसमें कोई तथ्य नहीं दिखा, इसलिए उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। तन्वी पृथ्वी, 2 दिन पहले ही तो एनसीबी को Tanvi Pruthi, a simple question that I'm asking you is this, that this entire, 1 second, Malvika please, 1 second, simple question to Tanvi Pruthi is this, that at the end of the day, this is the name of A-listers that have been repeatedly taken by the huge number of seizures that have taken place following the drug disclosures that have been made. You know very well about that case. Now, if there is a serious problem in Bollywood, and there is enough reason to believe the kind of statements that we've seen, that there is a very serious problem within Bollywood, then what is the problem with NCB actually probing whether you're an A-lister or a B-lister or whatever category of actor that he or she belongs to, from actually facing a probe? A very interesting point that you have just said, Madhav, that there should be no problem to anybody. Drug is a big problem in the country and it should be taken care of. I mean, I am not against people, Mr. Sirsa coming forward and investigations happening against Karan Johar or anybody. If they are at fault and if NCB finds some merit to the case, they should be behind bars. My only concern is, and my reservation is that, how the entire this platform, this Justice for SSR is being used by some opportunistic people just to be relevant in Punjab politics now that the elections are in 2 years. Okay. I mean, Mr. Sirsa, can somebody please ask Mr. Sirsa about the Bhola drug scandal in Punjab, which was the key reason why their government was thrown out, and we all know. Quick response from Subrashta. Quick response, Subrashta. I'm sorry, we are completely out of time, but quick response. Is the Justice for SSR campaign being misused by a section of people, as Tanvi Pruthi is alleging? No, I don't think, Madhav, we should stretch this argument so far. I would just want to remind Pruthi and the others that when the entire the SSR case exploded in the media and social media scene, the first thing which happened was lot of conspiracy suicide theories were floated around, and Yes. it was assumed that under a condition of drug abuse, that man committed suicide. This came from a lot of people. Now, I don't understand if this particular issue is being probed by the NCB. I don't understand why is there so much of discomfort and unease and weariness. Well, Let the NCB do certainly its job. those who perhaps have used drugs are scared of the probe, and that's perhaps a bit of a no-brainer in that sense. But the fact is that this is a legally mandated agency that is probing this matter. We'll have to see what they actually find through the course of this investigation. I'd like to thank all of you for joining us. Malvika Avinash, Subrashta, Sanjay Gupta, as well as Tanvi Pruthi. The News Hour at 10 will be right back after the break.